तो पब्लिक स्पेसिस में तो यार कुंडली के हिसाब से ही नाम यूज़ करना चाहिए। बराबर है। तो हाँ जी सौरभ भाई, आज तो हम वैसे तो BGMI खेलने के लिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे, लेकिन BGMI से पहले हमारा रिचुअल रहता है कि यार जियो पॉलिटिक्स पे थोड़ी बात कर ले। हाँ, तो जय भाई नाम बोलना, तो सौरव सौरव क्यों बोल रहा है भाई बाद में? और हाँ तूने जी, स्ट्रीम चालू नहीं किया अभी तक? जय भाई। हाँ नहीं, स्ट्रीम पे अभी नहीं जा रही है फीड। अच्छा, ओके ओके। सो सौरभ भाई आ जाओ। अरे वैसे तूने शक्ल वकल तो दिखा दी है मेरी व्यूअर्स को, और मेरी आवाज भी पता ही है, तो तू बोलेगा जय तो भी उनको पता तो चल ही जाएगा तू किसकी बात कर रहा है। बट लेट्स कॉल यू बाय योर स्टेज नेम जी। ओके। तो जी भाई, आज तो यार नया डेवलपमेंट ये है कि भाई ईरान वालों ने बोला है कि जब तक ट्रम्प ऑफिस में है तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद रहेगा। वाओ। तो क्या लगता है आपको, अभी पेट्रोल के प्राइसेस वाइसेस सब ऐसा ही रहेगा क्या? बताइए आप थोड़ा दो मत, फिर मैं भी अपने एक दो मत रखता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि वो क्राइसिस तो इन्फ्लेटेड रखेंगे, बिकॉज दे मतलब मोनोपोली तो ईरान की है ना, मतलब शायद तक। तो अगर वो जितना फ्लेयर अप करेगा, मेरे को लगता है ट्रम्प तो मतलब हो सकता है कि वो लोग भी उतना ही, मतलब वो फिर चीज को फ्लेयर अप करे, मतलब ईरान लाइक लगता नहीं है वो बैक डाउन होने वाले नेशंस में से है मेरे को। बैक डाउन तो नहीं करेंगे, वो बात तो है आपकी, लेकिन करना तो चाहिए ना उनको। हाँ, करना चाहिए उन लोगों ने, लाइक दे ट्रेन देयर लाइक, बट उन्होंने लाइक उनका वो लाइक द वे दे ट्रेन देमसेल्व्स फॉर बैटलफील्ड एंड वॉर रेडी सिचुएशंस, तो वो तो मरने मारने के लिए तैयार ही है ना। मेरा दोस्त ऐसे कुछ टाइम पहले वही बोल रहा था, मेरी बात हुई थी एक यूएस के फ्रेंड से, कि वो किसी पैलेस्टीनियन लाइक लड़की से बात कर रहा था, तो उनकी जो मेंटालिटी मरने मारने में ही वो लोग believe करते हैं, तो दे आर रेडी फॉर दैट। उनके हिसाब से ऐसा है कि यार हाँ। कि ऑल्सो उनका एक वहाँ पे तो देखने जाए तो एक उनका क्या बोलते हैं प्रोपागेंडा है कि वो लोग वर्ल्ड के जायनिस्ट से लड़ रहे हैं। हाँ। तो ये जायनिस्ट मतलब वो लोग समझते हैं क्या दोनों ट्रम्प और वो दोनों आ गए, डीप स्टेट भी अंदर इन्वॉल्व है, या कि खाली जायनिस्ट खाली ट्रम्प है, ना कि कोई और? कि उनके मिसाइल्स पे भी तो वो जायनिस्ट लिख के डाए, जायनिस्ट जायनिस्ट पर ये ओ, वैसा जायनिस्ट। था, मेरे को नहीं पता था। हाँ, यही पूरे वॉर का जो एक नैरेटिव है कि एंटी जायनिस्ट वॉर है ये। तो जायनिस्ट तो वो अमेरिकन्स को भी बोलते हैं, ट्रम्प को भी बोलते हैं, फिर इसराइल को भी बोलते हैं। कल उठ के वो इंडिया को भी बोलेंगे जायनिस्ट हो, क्यों? क्योंकि भाई आप इसराइल के साइड हो। सो एक जायनिस्ट वहाँ पे एक डेविलिस्ट टर्म है, डेविल है मतलब, काइंड ऑफ जो ओके। उन्होंने बाल का स्टैचू बंद किया था। हम्म। बाल का स्टैचू बंद करने के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब तो ये जायनिस्ट एंटी जायनिस्ट वॉर है। कि फिर वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि देखो वो स्कूल में इन लोग ने वॉर के स्टार्टिंग में ही बच्चों को मारा। ओम शांति, वो तो गलत ओम है, शांति। किसी भी वॉर में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन
अब उस पे तो यूएस तो मना ही कर रही है कि है भाई हमने तो नहीं किया कुछ। तो अब वो तो मीडिया की जिम्मेदारी बनती है ना यार। तो ऑन गोइंग वॉर में तो नहीं बोलेंगे चलो कोई कि वो तो, जैसे कि ये वर्ल्ड वॉर 2 में पोस्ट वॉर जो ट्रिब्यूनल्स होता है हम्म। उसमें सब ये सब डिस्कस होता है। ये तो अभी की डिस्कस करने की बात भी नहीं है। लेकिन वही इलोंगेटेड रहेगा ये। फिर लोग बोल रहे हैं, प्रोफेसर जियांग तो सुना होगा ना आपने, जे भाई। हम्म। कौन है प्रोफेसर प्रोफेसर जियान? प्रोफेसर जियांग एक बहुत बड़े, मैं दिखा देता हूँ रुक यार अपने व्यूअर्स को। हाँ, जियांग जैक्विन है। इसका आपको मैं स्क्रीन शेयर बता देता हूँ एक मोमेंट पे। ओके। इनकी वीडियोस बहुत फेमस हो रही है। ही इज़ द वन ऑफ द राइट नाउ द मोस्ट प्रोमिनेंट, क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक हाउ नॉस्ट्राडामस वाज, हम्म। वैसे ही इज़ प्रेडिक्टर ऑफ wars and crisis, हम्म। current crisis. She is also saying कि भाई ये है कि यूएस जो है ईरान में कर सकता है इन्वेड, मिलिट्री अच्छा। इन्वेजन। ये उनका पूरा कंटेंट है, काफ़ी प्रोमिनेंट है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है भाई स्क्रीन पे। स्क्रीन पे तेरे को कुछ नहीं दिख रहा? मतलब मुझे ओबीएस दिख रहा है बट आई कांट सी द आई कांट सी द दिख रहा है तेरे को? स्क्रीन शेयर में मैंने तो वैसे सारे विंडोज़ डाल दिए यार। अच्छा। अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा है प्रोफेसर जियांग जियांग शुक्विन। हम्म। Hard to pronounce. Top 10 most difficult to pronounce names. Jiang Zhuquin, Shequin, Shekin, Shokin. How to pronounce that name, dude? Classes लेनी पड़ेगी इसका नाम pronounce इट्स करने ए की. राइट हियर प्रोफेसर प्रोफेसर जियांग नहीं, जियांग। फुल नेम की बात कर रहा था मैं. जियांग शुकिन. जू जू होगा ना, ये चाइनीस होगा। यूकिन. हाँ, जियांग यूकिन. सो चाइनीज बॉर्न है, गजब है। प्लीज ओके. इसकी वीडियोस देखेगा तू। रोथियो वॉन के साथ में पॉडकास्ट किया, बराबर है. राज शमानी के साथ में भी किया हुआ है. व्यूअर्स आपको भी नाम. मैं दिखा देता हूँ सब कुछ, डोंट वरी अबाउट इट। शेयर और सब कर देना बस, व्यूअर्स आपको वही ध्यान रखना है बाकी। Today's guest is a teacher, geopolitics expert, and YouTuber known for his popular channel Predictive History, where he breaks down why global events happen and what could come next. We covered a lot of ground here: war in the Middle East, China versus America, secret societies. I had a fascinating chat with today's guest, Professor Zhang. दिख रहा है ना ये आपको? भेजूं?
हाँ. Sorry, I'm sorry. No, So I'm in China and we're just brainwashed all the time about American schools, Okay. American culture. I Yeah, mean, at least you're brainwashed not to have guns in school. yeah, That's some of the positive brainwashing, at least. yeah. Yeah, you came on my radar whenever I saw the videos about your predicting your Trump win and predicting the war in Iran. I noticed that you used something called game theory. Yes. Can you explain game theory just so people know? Yeah, so the idea of game theory is that if you want to analyze someone's behavior, you have to look at three things. First of all, you have to look at the structure of the game. How do you win the game? What are the rules? What are the incentives? And once you figure that out, then you can figure out his or her optimal behavior in this game. So in terms of geopolitics, just imagine United States, Iran, Israel, Saudi Arabia as distinct players in the game where they're trying to maximize the outcome against each other. And they will use their own unique strategies in order to achieve so. And that's how I'm able to make some amazing predictions. Yeah, I know the game theory. I remember first hearing about it in that film Beautiful Mind. Oh, yes. Who was what was the guy's name, Nick? John Nash. John Nash. Yeah, Yes. he uses that like whenever he's examining That's things right. or trying to figure things out. He uses that in there. That's right. And he went crazy too. Yeah, anyway, crazy. Yeah. So best of luck. Right. Thank you. Best of luck, Professor. Yeah, let's talk about the war in Iran. Let's start there because that's fresh. That's on everybody's mind right now. Yeah. Do you think it could be our new Vietnam, or how are you viewing the war in Iran right now? Yeah. The best case. इन्होंने बोला न्यू वियतनाम. क्या बोला? न्यू वियतनाम हो सकता है ईरान वॉर यूएस के लिए. Scenario is that becomes America's Vietnam, but I think the problem is That's best case scenario. That's best case scenario. Yeah. But I think the problem is that this war is expanding very rapidly. So before, a few months ago, it was limited to a war between Israel, United States, and Iran, and now it's brought in Saudi Arabia against the Houthis, which is in Yemen. There's a credible threat that the war in Ukraine might merge with the war in Iran. Really? Yes, because what's happened a couple weeks ago is that a Iranian cargo ship that was transporting supplies from Russia to Iran through the Caspian Sea, it was hit by a Ukrainian drone. What? Since then, the Ukrainians have apologized, but according to game theory, right now the Ukrainians aren't doing so well in Ukraine, and right now Russia's fighting a war of attrition, and because Russia is such a much bigger power than Ukraine, in the long term, Ukraine will ultimately lose this war. So to change that dynamic, what Zelensky wants to do is lure America into the war. And the best way he can do that is to combine the two fronts. If Zelensky shows that Russia can supply Iran through the Caspian Sea, then America needs to stop this trade. And Ukraine can help America by sending in drones to attack Iranian ships. एक मिनट रशिया सप्लाई कर रहा है ईरान को. That's what I guess he said. What the fuck? I thought Iran, like Russia, was The Ukrainians aren't our doing so friend well and in Ukraine. it didn't play like it didn't fuck with like extreme radicals, Like far Pakistanis. left radicals. मतलब ये प्रोफेसर जियांग बोल रहे हैं कि ईरान को हो सकता है रशिया दे रहा हो ऐसा. That is an insight. Right now, Russia's fighting a war of attrition, and because Russia is such a much bigger power than Ukraine, in the long term, Ukraine will ultimately lose this war. So to change that dynamic, what Zelensky wants to do is lure America into the war. And the best way he can do that is to combine the two fronts. If Zelensky shows that Russia can supply Iran through the Caspian Sea,
then America needs to stop this trade, and Ukraine can help America by sending drones Oh to my attack God. Iranian shipping. So there's a real threat that these two fronts merge, in which case all bets are off. In which case it's World War III, and you can also see the possibility of systems collapse, civilization collapse as well. All of that from that. From that, and the reason why is that area. Of course, I Ukraine, mean, the Middle East. अगर तू देखने जाए तो अगर यूक्रेन अगेंस्ट हो जाएगा ईरान के तो यूएस के लिए जीतना आसान हो जाएगा क्योंकि रशिया ईरान के साइड हो जाएगा. रशिया ईरान के साइड हो जाएगा तो फिर जीतना मुश्किल नहीं हो जाएगा यूएस के लिए. अरे जीतना मुश्किल हो जाएगा लेकिन बट ऑल्सो इट्स अ नरेटिव वॉर इन डिस्गाइज ना. ओके. तो नरेशन में हिस्ट्री में वो रिकॉर्ड हो जाएगा कि यार देख रशिया की ट्रेजेक्टरी तो ऐसी रही है कि जहाँ अमेरिका जाता है सीरिया है या समझ ले अफ़गानिस्तान है एवरीवेयर वेयर यूएस हैज़ गॉन एज अ रेबेलियस तो वहाँ पीछे पीछे रशिया भी जाता ही है. ओके. टू हेल्प दोज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री पर्टिकुलर कंट्री. जैसे अफ़गानिस्तान में भी बॉम्ब किया और उसका फिर रेपरकशन तो होता है. रशिया को भी टेरर अटैक्स देखने पड़ते हैं बट इसमें तो अगर ईरान का साइड देगी तो ऑन द वर्ल्ड लेवल रशिया का तो थोड़ा तो इमेज मार्जिनलाइज होगा ना कि हुज साइड आर यू ऑन. एक बार को चाइना सपोर्ट कर ले ईरान को तो समझ सकते हैं विथ हिज इविल एंड टीडियस पास्ट. बट रशिया तो जो है ही इज द वन हु कैन आल्सो टीम द यूएस. समझा कि यूएस को भी वो एक तरफ कंट्रोल कर सकता है अगर ही यूएस डिसाइड्स टू न्यूक सम कंट्री टुमारो. बट फिर ईरान को हेल्प करेगा ऐसे में टेरर प्रॉक्सीज मेंटेन करने में तो फिर इंडिया जैसी कंट्री को भी तो वैसा होगा कि अरे प्रेशर में आ गए हैं डीलिंग नहीं करनी होगी क्योंकि टेररिज्म से तो हम खुद भी तो जूझ रहे हैं ना भाई. Let's see. It's really the nexus or the heart of the global economy because that's where the world But gets. Ukraine and the Middle East are pretty far from each other. Can you even show me on this globe, actually? How far away from each other are they? Right. So this is really interesting. Okay, so this is Iran. And you can move that. Okay, sure. Yeah. So what I want to show you is how far these fronts are. Okay. Okay. So this war in Ukraine has been going on since 2022, right? It's been 4 years. And most of the fighting is going on in eastern Ukraine, right, over here. And fortunately, the war has been limited to this front. Now, as of late February, this war in Iran has broken out. And what's been happening is that at first, the main conflict was over the Strait of Hormuz, which is right here. But the problem is the entire Middle East depends on the Strait of Hormuz for trade. So Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, UAE, Kuwait, what they do is they take their oil and then they transport it all the way through the Strait of Malacca to East Asia and to India and Pakistan. So really the oil from the Middle East feeds the economies of Asia. You look at a place like Japan, it depends on 3/4 of its oil from over here. That's outrageous, bro. देख रहा है तू? The roots. You are seeing the roots. The specifically यही रीजन को अफेक्ट करेगा ये वॉर सबसे ज़्यादा. मतलब जो गवर्नमेंट इतना इथेनॉल के पीछे पड़ी है, अल्टरनेट फ्यूल के पीछे पड़ी है,
they must हम्म have assessed the situations कि यहाँ पे तो ये इतना तो इतना डायनामिज्म सोचने में कांग्रेस से कभी नहीं आ सकता भाई। सीधी अगर सीधी बात ब्रो। कांग्रेस होती तो वो लोग तो भाई यहाँ पे वो हुसैन के क्या नाम है उसका, कौन? the leader that the ex leader that just died a few months ago, हुसैनी के ऐसा ही कुछ नाम है ना, खालिद हुसैनी के ऐसा ही कुछ नाम है ना, आई फॉरगॉट हिज नेम। ओके ईरान का जो लीडर था ये इसका पैलेस वॉर लीडर, ओके 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 ओके। तो उसके तो पोस्टर्स लगते भाई यहाँ पे, लोग उनकी उसकी आरती उतारते, जो कि एक टाइम पे कुछ बीच में वो भी न्यूज आई थी कि ऐसा कुछ हुआ था कि इन लोगों ने, और हैदराबाद में तो इनके ऊपर शायद तक कुछ नाम वाम भी रखे हुए हैं इसके स्ट्रीट्स के और रोड्स के। अरे बाप रे बाप। सो मैं बोल रहा था वो ना, भी अपने यहाँ भी तो होता है। वो भी एक क्रूशियल एस्पेक्ट है कि मतलब दे शुड रीनेम द सिटीज टू देयर ओरिजिनल नेम, क्योंकि नाम से भी मतलब like words themselves are really powerful, या man. एंड द फैक्ट दैट दे आर कीपिंग दिस हियर, वो सब वैसी टेक्निक्स ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्ले विद द इमोशंस ऑफ दोज पीपल। to India and Pakistan. So really the oil from the Middle East feeds the economies of Asia. You look at a place like Japan, it depends on 3/4 of its oil from over here. Wow. In China, it depends on 40%. India, it's like 50 to 60%. In return, these places will send food over Oh my back god. to the Middle East as well as water because this place is a desert. They don't have their own Of course. food and water. But now, what people don't appreciate is that there are lots of byproducts of oil production. And one of these byproducts is fertilizer for food. And this fertilizer also transits through the Strait of Hormuz to Africa. And this fertilizer feeds their population. So imagine what happens if this entire area shuts down, right? You can have famine in Africa, you can have economic collapse in East Asia, which would then cause a domino effect where Africa breaks down, you have civil war, revolution in Africa. Then what happens? These migrants shift over to Europe. We've already seen that last week when you have this 50,000 essentially In Morocco? invasion. In Spain? That's right. A place Ah, called Ceuta, Spain. Yeah. Right, and that's a small part of Spain that's actually connected to Morocco, That's right. That's right. We can see how volatile the situation is. Wow, so it's really a domino effect. Right. Now, Ukraine is very important because Ukraine and Russia together supplies the world with 1/3 of its carbohydrates. So about Ukraine, Say that again. Ukraine and Russia together supply the world with 1/3 of their carbohydrates? So yeah. So Is that what you're saying? So what I'm saying is, 1/3 of the world's carbohydrates comes from Ukraine and Russia together. Wow, is that true? Yeah. So उसके सामने पूछ रहा है इज दैट ट्रू भाई? उसको विश्वास नहीं हो रहा कि भाई यार तू वो बोलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या होता है? ब्रो दैट मीन्स wheat ओके and any kind of non dairy product, grains, ओके millets. Ukraine is considered a breadbasket of Europe. Wow. The claim is not accurate if it means that 1/3 of all carbohydrates eaten or produced globally come from Russia and Ukraine. A more accurate version is Russia and Ukraine have supplied roughly 12% of internationally traded food calories and a very large share of specific bro. Grain exports. Wheat, barley, corn. Yup. grain export markets. About 28 And the thing is कि where India comes here is कि हमारे पास भी ये सारे supplies readily available है. We have also been a farmer, a forced farmer or a passionate farmer. That's a debate for some else.
टाइमलाइन बट हाँ ये सब हमारे पास भी काफ़ी बहुत अवेलेबल है इंडिया में 30% of globally traded wheat. So there is a huge amount of एक बार ये वीडियो देखो, यूट्यूब ये कर लो ये वीडियो भी पूरी तरीके से AI से बनी हुई है और ऐसी वीडियोस आप भी बना सकते हो. यही से बनी हुई है of food calories that comes out of there. That's right. That's So right. that is true. That's right. Yeah. Okay. So thanks so much for fact checking me. But you can appreciate how the world depends Thank you on so much for fact food, checking me. fertilizer, and energy from this area. And so the great threat is that because Russia can supply Iran through the Caspian Sea, the war extends to the northern Caucasus, which brings in Armenia, Georgia, and Azerbaijan. And then if that would happen, you can see this entire area is now engulfed in war. Another really critical thing that's been happening these past few weeks is that more and more nations are being brought into this war. Into which war? Into the one in the Middle East? In the Middle East. And the reason why is that for Iran... और वो पूछ रहा है मतलब अमेरिका में ऐसा है सबको अवेयर है कि they have multiple wars going involved right now. That's a relief. इतने तो ignorant नहीं है. Theo 1 वहीं का है ना guys, share and sub कर देना Theo 1 को. To pressure the United States, what Iran can do is threaten the energy infrastructure of American allies in the Middle East, including Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Bahrain. What Iran can do is hold the energy infrastructure of the Middle East hostage. Imagine Saudi Arabia as just this huge oil field. Okay. Right? And it's great in a time of peace because you can take this huge oil field and sell it to Japan, China, South Korea, India. But the problem is that a huge oil field means it's a lake of gasoline. So all I have to do is take a match, light it on fire, and then everything blows up. Wow. And Iran can do that with its drone and ballistic missile capabilities. And so Iran is always threatening this. The other issue is that Iran has proxies, meaning allies in the Middle East. And there are three major allies. Exactly जो मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में बोला ब्रो. Okay. Like जो proxies ईरान के है उनसे तो प्रॉब्लम सबको है. तो अगर रशिया सपोर्ट करेगी एट सम पॉइंट ईरान को तो आई गेस ऑन स्टेज तो नहीं करेगी कभी भी सपोर्ट, बैक डोर में करेगी ऐसे. The first are people called the Houthis, who are these religious fanatic people who live in mountains. And they occupy a very strategic area called the Bab el-Mandab Strait. Bab el-Mandab Strait? Yes. So here's the Strait of Hormuz, yes? Yes. This is the Bab el-Mandab Strait. And as you can see, these are the two most critical maritime choke points in the Middle East. Wow. And the problem is that the Houthis live in mountains. So it's almost impossible to dislodge them. And because so much of maritime shipping requires insurance, any threat of destruction means that the insurance companies don't want to insure these ships. And that puts a hold on global trade. So the real fear is that Saudi Arabia will launch a ground invasion to dislodge the Houthis and control this choke point, okay? So you can imagine a massive alliance being formed to go against the Houthis. Another major proxy is called Hezbollah, which is in Lebanon. figure out नहीं हो रहा क्या प्रॉब्लम है उनका. आया कहाँ पे वो भी मेरे को एक बार मैप पे चेक आउट करना. And these past few weeks, Israel has been trying to attack Hezbollah. And there's a real threat that this area, Lebanon, breaks out into total war. And right now, what Israel is trying to do is assemble an alliance to destroy Hezbollah. And this alliance includes Israel, but it also includes Syria, and also includes the Lebanese army. And Hezbollah is a proxy of Iran,
So Iran, if it sees Hezbollah under threat, then Iran would extend the war in order to help out Hezbollah. But why would the Lebanese army support Israel if hasn't there been issues between Israel and Lebanon recently? Right. So Like hasn't there been attacks in Lebanon from Israel? right. So Israel is attacking Lebanon because it sees Hezbollah as a threat, because Hezbollah can launch rocket attacks against Israel, and Lebanon can threaten. Hezbollah can threaten the Suez Canal. Because wait, Israel has been attacking Lebanon, right? That's right. Okay, great. That's right. So Hezbollah is not part of the Lebanese government. Got it. And so imagine there are different sectarian groups in Lebanon, and they share power together. And one of these groups is Hezbollah. And Hezbollah is aligned with Iran, and they are committed to protecting themselves from Israel. And Israel sees them as a bunch of terrorists that need to be removed. And Hezbollah, the problem with Hezbollah is that it's extremely popular in Lebanon among the Lebanese people, because unlike the Lebanese government, they're not corrupt, and they provide good services to the people. Understood. So yes, sometimes we hear about these groups. You hear about Hamas, you hear about Hezbollah, Yes. but the people there in some of these countries actually prefer some of these groups, or actually do support some of these groups because they're kind of an outlier government that's more supportive to the people That's right. than the actual government. That's right. So they're popular because they are able to provide basic community services to the local population. And unfortunately, these governments in the Middle East, a lot of them have proved to be very corrupt, and a lot of their leaders seem to be sympathetic towards Israeli interests. And people suspect that they've been blackmailed by Mossad, because Mossad's very good at that. Yeah. Yeah. What kind of blackmail could Mossad be doing, do you feel like, in these spaces? Like, you talk about blackmail, and you hear about blackmail a lot. Yes. You hear about Mossad. Yes. You hear about blackmail in America a lot. Yes. Like, with the Epstein files and Right. different places holding things potentially over, like, American politicians' heads. So I think that rather than use the word blackmail, I think we can use the word influence. How are they able to have so much influence in the area? Well, I mean, the easiest way is to become friends with these people, right? So let's just say you're leader of Lebanon. Well, you have children. Don't you want your children to go to the best schools? Don't you want your children to get good jobs, maybe working for like Goldman Sachs, maybe working for a university as a professor? Well, we can help you because we have all these friends in the United States, and we can arrange visas for your kids to go study at elite universities. We can ensure that they get good jobs, right? Right. I mean, it's That's that simple. ब्रो मतलब भाई देख इतनी फैसिलिटीज तो अपने को भी नहीं मिलती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम स्पीकिंग ब्रो, दैट्स व्हाट आई पॉज्ड कि इवन इन आवर कंट्री दिस वुड बी पॉसिबल बाय मोसाद। बीइंग एन एलाय ऑफ मुस्लिम, वो बात तो सही है कि तुम कोई मुस्लिम के एलाय हो तो तुम्हें बहुत ही इजी एक्सेस मिलेगा हर एक उनके, you just have to align with their cause, that's it. Yeah. वो अलग बात है कि they will delete you if they don't find you useful. Of तुम course. भले ही अपनी allegiance एकदम ऐसे नॉनशलेंटली फॉलो कर रहे हो और लग रहे हो कि हाँ भाई इसने मेरे अगर को तुमने ओथ ले लिया है एंड दे डोंट फाइंड यू यूजफुल इनफ, तो एप्स्टीन जैसा होता ही है। हाँ they'll remove you उसमें ऐसा वो लोग दया नहीं दिखाते अपने जैसे भाई। वो लोग तो भाई सर कलम कर, उनके तो लिखा ही है सर कलम, और उनके तो लिखा ही है भाई मोहम्मद और आयशा का। भाई जो इंसान, जो लोग ऐसे भगवान की पूजा करते हो। So yeah, Mossad means Israel's intelligence. ओके नहीं, बट ये तो लेबनान की बात कर रहे हैं ना कि हाँ, तो that's how Israel will control Lebanon, मोसाद के थ्रू। नहीं, बट ये मतलब उसकी बात कर रहे हैं ना कि लाइक जो लेबनान के लोकल पीपल है, हाउ दे कैन लाइक हाउ व्हाई आर दे अलाइंड टुवर्ड्स द लाइक these terror outfits. हाँ, लेकिन ये जो फैसिलिटीज देने की बात कर रहा है वो मोसाद देता है। फिर जैसे कि मिडल ईस्ट में
आज भी वैसे लोग हैं जो दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक स्कूल्स। जैसे अपने यहाँ गांव में नहीं होता है अच्छी स्कूल्स, तो अगर उनको सपने दिखाए कोई कि यार मैं तुमको न्यूयॉर्क भेजूंगा तुम्हारे बच्चों को, इनको यहाँ भेजूंगा, इतने पैसे दूंगा, तो दैट्स हाउ तुम्हारे सिविलाइजेशन में स्टार्ट होता है ये सब। कि अगर तुम्हारे पास वैसा स्टेट के थ्रू अवेलेबल नहीं है ये सब चीज़ें, बेसिक अम्यूनिटीज़, तो वहाँ पे जो मौसाद का कंट्रोल अगर करना है तो इजी रहेगा। तो दैट्स व्हाट प्रोफेसर जियांग इज सेइंग कि इसराइल के लिए लेबनान का सपोर्ट लेना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके। सपोर्ट लेना मतलब कि अगर लेबनान को भी उनको टर्न ऑन करना है अगेंस्ट एनी ऑफ द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, तो उनके लिए एक दो रात की बात है, ऐसा बोल रहा है। ओके। Right. It's that simple. Let's just be friends. Right. Right? And so if you're a leader of a place like Lebanon and the entire place is rife with sectarian violence, there's not much you can do. The entire place is rife with what? Sectarian violence. Sectarian violence. Sectarian violence? So let me say what? Sectarian. Okay. Sectarian. बहुत deep Violent. word use कर रहा है ये। Sectarian. And sectarian ये violence is साले गोरे को लग रहा होगा साला ये सब मेरी कंट्री से ही सब चीजें हो रही है और मेरे को यहाँ से लोग बाहर के सिखा रहे हैं। physical conflict and harm between different religious or political groups within a community or nation. That's सब फैक्ट चेक कर रहा है वो। एंड इट्स गुड कि व्यूअर्स को आजकल के जेनजी या उनको तो पता ही नहीं है ना ये सब। इवन नॉट मी बट आई हैव तो बीन वेरी रिगरसली यूपीएससी का आई वांटेड टू बी अ एस्पिरेंट, तो आई वाज इनटू ऑल दिस। there's a lot of that in Lebanon. Yeah, because you have a lot of different religious groups in Lebanon. Okay, You have understood. the So Christians, they you look at have the UPSC. Muslims, and then they're Ah, also broken up in like But But it different groups. demands like And there are also like these बहुत tribal ऐसे loyalties throughout the Middle dedication, East. मतलब ऐसे So if you're a सब छोड़ ही देना leader पड़ेगा of UPSC Lebanon time or पे, मतलब उतना वो Iraq वो है ना syllabus बहुत बड़ा है or उसका शायद। any place in the Middle East, you're dealing मेरे को with एक a very volatile political situation. मॉक पेपर देना तो And है। do you really want to deal with these people, or would you rather use your position to ensure that your children have a better future? Right? To help out your relatives, to help out your friends. And that's why they go into these political positions. So and that's the main way that the Mossad is able to exert influence over the Middle East, because they can help these leaders send their money and their children to a safe place in Europe or the United States. And that is just being friendly. Yeah, that's human survival too. It's like Exactly. where you want to survive, हाँ, you want to इसने बोला be ना ह्यूमन सर्वाइवल कि इफ योर स्टेट इज नॉट एबल टू अफोर्ड ऑल दैट, तो एवरीवन कुड बी इंक्लाइंड टू ऑल दिस terms and condition well enough to take care of yourselves. That's right. So it's not always like a level of blackmail that's violence. Sometimes it's a level of relief. it's a level of assistance. That's right. I'm just helping you out. Yeah. Right? We're just helping each other out, right? Right. I help out your children, and you help me kill people who are doing nasty things like Hezbollah. Right? We both hate Hezbollah because they're terrorists. So we're just like rubbing each other's back. Yeah. You mentioned the Strait of Hormuz a few minutes ago. Yes. Why is that place so important? Yeah. So that place. Because you hear it all the time. Can you Yes. explain it kind of in basic terms and why it's so important? Right. Okay. The Strait of Hormuz is the linchpin of the Middle East economy, because like if we just look at this globe, okay, there are certain countries बहुत that narrow है, are बहुत narrow है। within the Persian Gulf, Lynch right? pin Kuwait, मतलब Qatar. क्या प्रोफेसर है यार ये भाई, मतलब लाइक जो अपने यहाँ समझ जो ओल्ड सिटी की गलियाँ है ना, वैसा माहौल होगा वहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। The United Arab Emirates, basically Dubai. Now it's important because there's only one way for them to transport their oil. Okay, got it. अगर आप AWS Azure क्लाउड यूज करते हैं और कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी से Right. Okay. Do you see how
there's only one passageway. It's like a one-way street, Got it. right? So they're going to take their oil and then transport it to East Asia, Mm-hmm. and then what they get in return is water and food because it's a desert. They can't grow their own food. Got it. They don't have their own water. Okay. Okay, so that is crucial to their survival. If that were to be eliminated, like suddenly closed off, then UAE, Qatar, Kuwait, Iran, all these places would be dead in the water. Recently, Trump had spoken up. I think it was even just the other day where he said, that Iran will be hit very hard. You know, he's always like, we're gonna hit it. You know, Yeah. we're gonna hit him in the in the fucking head nuts or whatever. We're gonna fucking hit him in the, the mittens they wear on their head. He's always doing something. But it's like he said they're gonna be hit very hard if the Strait of Hormuz doesn't open very soon. Yes. How is Iran like controlling that effectively right now for themselves, right? Yes. And how successful are they being with their Yeah. we're gonna hit him in the in the fucking head nuts or whatever. We're gonna fucking hit him in the, the mittens they wear on their head. He's always doing something. भाई BGMI खेल लेना. भाई मेरे को तो नींद आ रही है ब्रो. अरे भाई It's geopolitics का क्लास होता है तो नींद तो आती है यार. हाँ भाई अच्छा है पर कुछ सीखने को मिला. हाँ नहीं ये सब तो मेरे को भी नहीं पता था यार. But it's like he said they're going to be hit very hard if the Strait of Hormuz doesn't open very soon. Yes. How is Iran like That's controlling really that custom effectively right now for themselves, right? Sure. Yes. And how successful are they being with their management of the Strait of Hormuz right now? Yes. Okay. So to answer this question, I have to explain a concept to you called the escalation ladder. Okay. Okay. So what is the escalation ladder? It's a very simple idea, which is in a fight, emotions create momentum. Okay. Okay. So for example, let's just say you and I, we have a fight. I tell a joke, you think it sucks, I get pissed off at you, so I punch you, right? So what? Then you punch me back. Then I'm like, okay. Then I take out a knife and I stab you. Then you take out a knife and then you stab me. Then I take out a gun, I shoot you. Take out a gun, then you shoot me. Then I take out a bazooka and I hit you. Okay. Okay. But you can see how it's a ladder. And how emotions create momentum, but there's a logic to the escalation. Okay, so understanding the escalation ladder now, I'll explain to you how the war in Iran has been escalating, Okay. and how it should continue to escalate if the war continues. So this is an escalation ladder you're showing involving Iran and the Strait of Hormuz. yeah. So this is the United States and this is Iran. Okay. Okay. So we start the war with the United States using something called a decapitation strategy, meaning that what the United States believes that if I take out your leader, now you're leaderless, and therefore you must surrender to me. So in the first day, February 28th, they killed the Ayatollah Khamenei, the supreme leader of Iran. The Ayatollah Khamenei, yeah. That's right. अच्छा And they उसकी killed बात also a कर lot रहा of... था तू भाई. हाँ तो हैदराबाद में रोड के भी नाम पे खमेने और वो सब स्ट्रीट और वो सब है पता है तुझे. हाँ 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 हाँ. और वो सालों पहले बना था मतलब ये भाजपा के रूल में अरे ही बना बहुत. ये इसको मारा गया फिर तो रैली निकाली थी ना हैदराबाद में तो. हाँ लोग ऐसे छाती ठोक रहे थे भाई अपनी. और वो बात तो ये सब रिपब्लिक वाले और वो सब तो खुल के बोलते हैं भाई कि जब आयतुल्लाह मरा था खमेनी तुम लोग छाती पीट रहे थे अपनी भाई सब जगह पे. Your leadership. And this is what we call a decapitation strike. And the assumption is that if you take out the leader, then Iran would break out into civil war and they surrender to you. And this is exactly what happened in Venezuela a few months back, right? So this is what we call a decapitation strike. When they got Maduro. That's right. Yeah. That's And he right. was in jail with 6'9", which is crazy. Okay, yes. So, Okay. but it didn't happen here. But it didn't happen here, okay? So that's the first strike, okay? What the So hell they is tried it wrong? in Iran. ये अमेरिका. रैपर के ऊपर क्या इतना वो 6 के साथ में था तो क्या हो गया भाई. मतलब I don't understand the obsession of American people, or I don't understand the stupidity of American people.
कि ऐसी ही स्टूपिडिटी हमारे यहाँ बॉलीवुड के लिए है, पता है ब्रो? अरे ये तो इसके साथ, हाँ दाऊद इसके साथ था, दाऊद इसके साथ, अरे दाऊद वो, दाऊद ये, दाऊद मुंबई में यहाँ चाय पीता था, हाँ तो वही ले चाय वाले को पीएम बना लिया, अब बोल। मतलब ये ऑब्सेशन पता नहीं कहाँ से ये करे जाते हैं सिटीजन्स में, वो भी मास सिटीजन्स में, जैसे इसका ये अभी जियो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और वो 69, आई डिडंट इवन अंडरस्टूड कि क्या कहना क्या चाह रहा है। मदुरो को 69 के साथ रख दिया, मैं सोचा उसका सेल नंबर 69 है क्या। नहीं भाई, वो मैक्सिकन रैपर की बात कर रहा था वो। एग्जैक्टली मतलब दे आर ट्राइंग टू ऐसा लिंक के अमेरिका इज रेसिस्ट मैक्सिकन्स के थ्रू, समझा? या फिर नॉर्थ अमेरिकन्स के, अरे साउथ अमेरिका पे उसकी नज़र है ट्रम्प की, वेनेजुला के पैसे ले गया। अरे वेनेजुला क्या कर रहा है वो तुम मीडिया नहीं दिखा रहे, और जब अमेरिका ने एक्शन लिया तब तुमको अमेरिका का एक्शन दिखाना है, लेकिन मदुरो कौन है वो किसी को पता नहीं है। तूने एक भी डॉक्यूमेंट्री देखी मदुरो कौन है? नहीं भाई। वैसे ही तूने सेम मीडिया में देखा दाऊद का क्या कारनामा था, लेकिन ग्लोरिफिकेशन कैसा होता है भाई कि भाई ओ दाऊद ओ क्रिकेट का किंग पिन, वैसे ही वहाँ पे कोकेन का किंग पिन मदुरो, वाह भाई। On, they tried the decapitation strategy, Yes. but it didn't break out in civil war. That's right. That's right. So now what Iran does is it strikes back by closing off the Strait of Hormuz, UN? right? And but that's because they made a new Ayatollah who took over. Who was that? The sun, The son. right? So So Khomeini's son. that's right. They replaced the Ayatollah क्या बात कर रहे हो यार? Khamenei with the Ayatollah Khamenei. Okay. Yeah. And then what Iran did, close up. The first thing they did was close up the Strait of Hormuz, but they started to attack America's allies in the Middle East, including Qatar, Dubai, Bahrain, Kuwait. Okay? America did? No, Iran did. Okay, so take me back a step. Okay. All right. So the United States does a decapitation strike, Got it. and then Iran punches back. How? By putting pressure on ऐसा America's नहीं लग रहा allies. कि ये सब अमेरिका की गवर्नमेंट ये सब इन्फ्लुएंसर्स को फोर्स कर रही है ये सब चीज़ों पे टॉपिक करने को, और यहाँ पे इसके डिस्कॉर्ड का वो लोगो है, गेमर ही लगता है ये भाई भी। Right? They attacked Israel, they attacked Dubai, they attacked Qatar. The reason why they did that was the theory that these places give a lot of money to the United States. They invest a lot in the US economy. So therefore, they have a lot of leverage over the United States. If they're being attacked, they would pressure Trump to end the war. Okay? And so once Iran did that, then that forces the United States to basically have a ceasefire. Because if the war continues, then what would happen is the entire world would lose at least 20% of the global oil supply. And this could possibly create economic collapse. So you're saying America had to take a break then and rethink about what's going on? Yeah, because the first strategy didn't work. Got it. And the United States didn't have a second strategy. And the Strait of Hormuz is closed at this point? They closed it? ब्रो तेरे को सोना है तो सो सकता है if you want to, Sure, man. वरना देखना है तो देख सकता है मेरे साथ, मैं तो अब 1-2 घंटा स्ट्रीम करूँगा। Yeah, it's like, damn. क्या करना है बता। By the way, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का नाम यार, like it should be Indian film industry, to be honest, with the shit propaganda shit that they are actually making. अभी जैसे कि ये जो रिलीज हुई मूवी पार्टीशन करके,
तो जब रिलीज हो रही थी तब मैं आनंद में था, तो हम लोग सोच रहे थे उस दिन कौन सी मूवी देखने जाना है, कौन सी, क्योंकि सुबह से आए थे थोड़ा बहुत, एंड ऑब्वियसली टाउन्स के अंदर जैसे मूवी टिकट सस्ती होती है, तो दैट्स अ लाइफ हैक फॉर पीपल या लिविंग इन टाउन्स के। भाई हमको तो 100 में पड़ेगी, हम लोग संडे जब, वो भी ऑफर ऑफर अलग है, पीवीआर वीवीआर तो उधर भी है, तो उनको जैसे कि ऑफर के साथ में, जैसे कि पीवीआर का अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, पॉपकॉर्न, पेप्सी का ऑप्शन सब मिला के उनको 400 रुपए पड़ेंगे, 400 500, अपने को तो 400 रुपए के लिए टिकट का, ऊपर से ऑफर का अलग देने का, तो अपने को तो 800 900 पड़ जाएंगे। तो दे हैव दिस, एनीवेज टॉकिंग अबाउट द मूवी, सो बुक माई शो पे रिव्यूज चेक कर रहा था, और मैंने बोला कि मैंने देखा पहले कि प्रोडक्शन किसका है, क्योंकि मैंने ट्रेलर देखा था इसका ओके इसका तो इसमें आई थिंक ब्रांड न्यू डे में ट्रेलर आया था, पार्टीशन 1947 का, तो मेरे को लग रहा था भाई ये मुसलमान ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैं मुसलमान हूँ तो भी मारा जा रहा है, ये मारा जा रहा हूँ, ये वो, तो मेरे को कुछ तो प्रोपोगेंडा लग रहा है मेरे को, तो मैंने बोला कि लग रहा है ऐसे प्रोपोगेंडा वाली मूवी, प्रोडक्शन किसका है, तो आमिर खान प्रोडक्शंस निकला। फिर मैंने लगा कि प्रोपोगेंडा मूवी है, नहीं देखना, फिर मैं रिव्यूज चेक कर रहा हूँ तो लेजिट एक बंदे ने पैराग्राफ लिखा भाई, और वो पैराग्राफ का टॉपिक ही सेक्युलर प्रोपोगेंडा था भाई। वो सो लाइक देयर इज, लाइक पीपल आर The shift who moves is No, at this point in the latter. okay. So throughout this entire process, there's been a lot on and off. So sometimes it's open, sometimes it's closed. Mhm. Okay.